Hello and welcome to the new episode of Speaking Mind. आज की बातचीत का उन्वान, टाइटल और शीर्षक है बाबरी मस्जिद के खंडरात से हिंदू राष्ट्र का ज़हूर, उदय या उदय, और द राइज ऑफ हिंदू राष्ट्र फ्रॉम द रूइंस ऑफ बाबरी मस्जिद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन या प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हो रही है। बहुतों का कहना यह है कि ये एक रिलीजियस इवेंट से ज़्यादा पॉलिटिकल इवेंट मालूम पड़ता है, और जिस तरीके से बीजेपी, आरएसएस और उसकी अलाइड पार्टियां इसका इश्तहार, इसका एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, प्रोपगेशन कर रही हैं, वो इस कहने में बचाने पे हैं। उसमें से जो हमारे प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री इस इवेंट में शामिल होंगे तो इसका पॉलिटिकल इवेंट बन जाना और व्हाट लाइज इन द स्टोर इज क्वाइट सर्टेन। आज हम इसी बात पे आपको हम आगे लिए चलेंगे और आई विल टेक यू थ्रू द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स व्हिच लेड टू द प्रेजेंट सिचुएशन। यूं तो हमारी आज़ादी का सफर 1857 गदर से शुरू होता है। आपको पता होगा कि गदर के दौरान हिंदू मुसलमान सिपाही जो कि अंडर ब्रिटिश साम्राज्य काम कर रहे थे, उन्होंने उनके खिलाफ बगावत की और उसके लिए उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया। ये अलग बात है, कुछ दिनों में ही ये बगावत को कुचल दिया गया और हमारी शिकस्त हुई। लेकिन जंग आज़ादी या आज़ादी की तहरीक जो है चलती रही और उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ आइडियाज, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फेथ एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एफिलिएशंस पार्टिसिपेटेड। कुछ लोगों के एक्सट्रीम ओपिनियंस थे जो हथियार उठाना चाहते थे, और कुछ लोग मॉडरेट थे जैसा कि गांधी, जिन्होंने गांधी जी के फिलॉसफी पे अमल किया, जो फिलॉसफी थी आपको पता ही है, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह की। अल्टीमेटली जीत उसी की हुई। इसी दौरान ये बात भी काबिल जिक्र है कि 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में ग्लोबल पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा था। उसमें से बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज निकल के आ रहे थे। उन्हीं आइडियाज में से कुछ से इंस्पायर हुए हमारे हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिन्होंने हिटलर से इंस्पायर होकर एक हिंदू राष्ट्र की बात की। In the modern times, in the life of our nation, 15th August 1947 is the most important date, when at the stroke of midnight, we Indians won hard-fought battle and gained independence from the British colonialism. मगर ये आज़ादी हमें बिना कीमत के नहीं मिली। भारत का और हिंदुस्तान का कुछ ज्योग्राफिकल हिस्सा, कुछ टेरिटरीज हमें पाकिस्तान को देना पड़ा to meet the demands of Muslim League for a separate homeland for Muslims. मुस्लिम लीग ही अकेली दावेदार मुसलमानों कैसे बनी, इस पर हम अलग बात कर सकते हैं, लेकिन ये ताज्जुब का जरूर मसला है। आजादी के बाद आरएसएस एंड हिंदू महासभा और इस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन ने they never accepted the whole form, shape and idea of India that we have today. They kept on trying and reiterating their demand for Hindu Rashtra through ideological work in political and social aspect. यहाँ ये बताना जरूरी है कि टू नेशन थ्योरी जो सबसे पहले किसी ने आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक्सप्लेन किया था वो दामोदर सावरकर थे। वही सावरकर साहब जिनको कुछ लोग वीर बोलते हैं, और यहाँ बात जानना जरूरी है कि वीर का टाइटल उन्होंने खुद अपने आप के लिए दिया था। उन्होंने अपने एक वर्ड में ये आइडियोलॉजिकली एक्सप्लेन किया कि हिंदू और मुस्लिम दो डिफरेंट नेशन हैं, therefore they need to have two different countries, और हिंदुस्तान बड़ा हिस्सा या हिंदुस्तान पूरे का पूरा हिंदुओं को मिलना चाहिए, इसलिए कि ये उनके मजहब का कंट्री है, जबकि मुसलमान और क्रिश्चियंस की मजहबी जगहें वो हिंदुस्तान से बाहर है। So he was the first one. Is another thing that is Muslim League who took this idea to the extreme and demanded and succeeded in creating a Pakistan, which was an unfortunate incident. The constitution crafted under the chairmanship of B.R. Ambedkar provided a foundation for the new nation state. It was important, especially in the background of the creation of Pakistan along the religious line. As Nehru has said once, moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, and when age ends, when the soul of nation long suppressed finds utterances. अच्छा, एक बात जो कि मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा
तो 26 जनवरी 1950 से पहले का एक और इवेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू शेप द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री और हिस्ट्री टिल टुडे वाज 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात 1949 की 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात। उस दिन क्या हुआ, उस रात क्या हुआ? दिल्ली से दूर, दिल्ली में जहां उस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग बैठे थे, फाइनल शेप दे रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव एंड सिंपलर कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं उस रात कुछ लोगों ने, कुछ शरपसंदों ने इनफैक्ट अयोध्या में दिल्ली से दूर आधी रात में एक मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रख दी और ये हंगामा किया कि जो है राम लला जो है वो मिरेकलसली अपीयर हो गए हैं। किसी को अंदाजा नहीं था। अच्छा, यहाँ पे एक बात जरूर याद रखिएगा कि अयोध्या एक तो दिल्ली से दूर छोटा सा शहर, और वहां एक मस्जिद है जो बाबरी मस्जिद कहलाती है। शायद अयोध्या के बाद कोई भी नहीं जानता था उसको। बजाय बहुत ही मामूली लगने वाला ये वाकया it's going to play an extremely important role in our nation's history, which was starting a note of secularism, republic starting on secularism and inclusiveness, will gradually move towards the more vegetarian and exclusionary practices. And this stint will play an extremely important in coming days. I will take you through some more events and you will understand why I said, when I said in the beginning that Hindu Rashtra rises from the ruins of Babri Masjid. This was the starting point, 22 to 23rd December 1949. An event which we should not forget and which will not be forgotten by the history as it reshaped the journey of our nation. अभी मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही insignificant इंसिडेंट लग रहा था, लेकिन इसके बाद से क्या हुआ कि दोनों पार्टीज ने केस किए। हिंदू साइड से जो लोग मंदिर जा रहे थे, जिनका ख्याल था कि रामलला की मूर्ति मिरेकलसली जो अपीयर हो गई है, उन्होंने केस किया कि ये रामलला का जन्म स्थान है। अच्छा, यहाँ पे एक बैकग्राउंड और या इंफॉर्मेशन जरूरी है कि इस साइट पे, बाबरी मस्जिद के साइट पे और उसके जो बेसिकली फ्रंट यार्ड था, उसमें एक जगह पहले से राम जन्म स्थान के नाम पे एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ था जहाँ के हिंदू पूजा करते थे। तो एक तो बड़ा, अगर आप इसको इफ यू कैन इमेजिन कि मस्जिद का एक बड़ा अहाता है, जो लोग मस्जिद से वाकिफ होंगे तो वो समझते हो कि मस्जिद में जब एंटर करते हैं यू गेट फ्रंट यार्ड कैन बी कॉल्ड कोर्ट यार्ड, एंड देन यू हैव इनर सेक्शन जहाँ के मस्जिद का इमाम जो है वो खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है या वो वहां पे वो वाज करता है। तो इस रात 22 से 23 दिसंबर की दरमियानी रात से पहले वहां पे बाबरी मस्जिद के कोर्ट यार्ड में ऑलरेडी एक जगह थी जिसको के राम जन्मभूमि, राम जन्म स्थान कह सकते हैं, वो खाया जा रहा था। उस रात ये हुआ कि रामलला की मूर्ति जो है वो अंदर वाले हिस्से में रख दी गई थी, और जब वो केस हो गया तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब थे के नायर, जो इंसिडेंटली बाद में जनसंघ जो कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग था उसके टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा। So I'm right to say, or you would be right to say, that from the very beginning, this religious event, or basically the event by the miscreant, was made a political move by RSS. Next date which I would like to draw your attention is 23rd April 1985. उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, एक केस जिसको के आमतौर पे शाहबानो केस जाना जाता है, having her right to demand maintenance from her husband after divorce as she could not sustain herself. एक लैंडमार्क जजमेंट था to protect the right of women. और again, but on the face of it, it looks very simple. In judgment which could happen in thousands of courts all over the world, but this triggered a profound debate and clash between civil and personal laws, highlighting the struggle of a republic to balance individual right with universal principle. बेचारे उन जजों को पता भी नहीं था कि उनके इस जजमेंट को, which favored women, particularly divorced women, this will be reversed back by another regressive law passed by the parliament. उसका नतीजा क्या होता है कि
it gives a pass to BJP and his courts to carry out a Mediterranean agenda later on down the decade. Basically, immediately, well, the 80s was the decade जब इंडियन सोसाइटी सबसे ज़्यादा कम्युनलाइज हुई थी. उसमें से जो ट्रिगरिंग फैक्टर था वो शाहबानो केस था. देन शाहबानो केस का रिवर्सल बाय द पार्लियामेंट, जिसके लिए बीजेपी एंड आरएसएस और बहुत सारे लिबरल्स भी ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट should not have gone back and legislated a law to make null and void what the benefits that be given to a diverse woman. Why it was done? Again, because on the behest of Indian Muslim conservatives. I mean, they raised a storm all over India and they demanded that personal law should be upheld, and therefore Rajiv Gandhi government passed a legislation, Muslim Protection Bill, which basically made null and void the benefits which were given by the earlier judgment of this team of Supreme Court of India. As a result, BJP took this issue, liberals of all sorts, and people who don't believe in the personal laws then said this is a bending backwards. This should not be done. And this allowed BJP to carry on some of their agenda, which they have been successfully carried out. The second, on a side note, I must tell you that later down in the decade, we have some of the serials, TV serials, which have been broadcasted live by the state television, like Ramayana, Mahabharata later on, or something of or similar serials, which literally made or craft the mind, the environment, the social acceptance, as well as ultimately the political bulwark to forward Hindu Mediterranean agenda. 80 के दहाई में ये शाहबानो केस के जजमेंट के बाद माहौल इतना काबुल से बिगड़ चुका था या इतना कॉमलाइज हो चुका था, इतना बिगड़ चुका था कि कोई भी ओपनली, इवन टुडे इंडिया में अब तो ये हालत ये हो गई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुल के माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं कर सकती इलेक्शन में, खासतौर पे जैसे कि क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बारे में. आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल एंड cultural, so-called cultural and social organizations like VHP and Bajrang Dal, they have long been propagating this so-called appeasement of Muslims. And Shahbano case and the legislation later on gave them a ready-to-fire issue whereby they said to the gullibles and to the ordinary folks that, look, here what we have been saying, this is the appeasement, this government is doing appeasement of the Muslims, and for them they can go bent backward as well. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था. इस legislation ने, yes, it was a regressive, it is a regressive, that it tried to take away the rights of a woman, particularly of a divorced woman, those who can't sustain of themselves, by denying them, by upholding the personal law. But there was a lacuna, there was a gap in the personal law which this legislation wanted to address. However, this completely backfired. It was took away by the communal forces, and they took this as it trumps all across India. And वो appeasement की theory फिर से reinstate हो गई. And easy to convince ordinary people कि देखो हमारा constitution, हमारा कानून ये बोलता है, और देखिए ये मुसलमानों के प्रेशर में, खासतौर पर मुल्लाओं के प्रेशर में ये गवर्नमेंट ऐसा काम करती है, इसका मतलब ये हुआ. और at the same time they try to juxtapose it by saying that यहाँ हिंदुओं की बात तो कोई मानता नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए अगर they want to go to backward and then bring something, they will do it. So this government is anti-Hindu, so we have to do something about it. अब इस आगे बढ़ते हैं. तीसरी important, चौथी important डेट है 1st February 1986, where on the petition filed by third party in Ram Janmabhoomi Babri Masjid issue, or Babri Masjid Ram Janmabhoomi issue, the local court in Faizabad allowed them to open the door, a gate which was closed in 1949.
2009. Arguing, the court gave the reason that since this lock was, the gate was locked on the advice of district administration, not by the competent court, hence the court advised the door should be opened. What does it mean? It means the masjid practically became, it was not worshipable for Muslims because we had Ram Lala Murti inside and the door was open and Hindus were allowed to do the worship where Muslims were not allowed to offer any prayer since 22nd, 23rd December 1949. This was a strong support, rather I would say, a shot in the arm as we say, for the Hindutva forces which made India one step more closer to Hindu Rashtra, de facto Hindu Rashtra or Mediterranean state. कुछ लोगों का कहना यह है कि राजीव गांधी गवर्नमेंट जो राजीव था सेंटर में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उनका ये एक्ट के तरफ उन्होंने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और राइट ऑन डाइवोर्स बिल पास किया उधर दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का ताला जो है खुलवा दिया गेट खुलवा दिया ताला ओपन करा दिया It was a balancing act. He tried to appease both conservatives from both Muslims and Hindus. राजीव गांधी से पूछा गया तो उन्होंने इसको डिनाई किया उन्होंने कहा कि ये काम उनके इंफॉर्मेशन और नॉलेज में लाए बिना किया गया था और इसका जिम्मेदार उन्होंने वीर बहादुर सिंह उस जमाने के चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के उसको अरुण नेहरू को एमएल फोतेदार को बताया और जो आपको पता ही होगा कि बाद में अरुण नेहरू जो थे वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा इस बात की सिग्निफिकेंस मैंने अभी जस्ट कुछ पहले कहा था कि 1984 का इलेक्शन बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी थी उसके सिर्फ 2 सीट्स पार्लियामेंट में थे एंड दे कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर बेटर सिचुएशन लाइक दिस वन। अभी फिलहाल राम जन्मभूमि संघर्ष समिति बनाई गई थी जिसका कि उसको हेड कर रहे थे अडवाणी साहब and he took this opportunity, went around the country asking for, telling people this is our victory, ये हमारी जीत है और इसको जीत को आगे बढ़ाना है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। कार सेवा शुरू कर दी गई, ब्रिक्स और दूसरे डोनेशंस जो है राम जन्म भूमि के नाम पे मंदिर के नाम पे जो है लिया गया और इसमें भारत आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, बीएचपी को दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए। मैं इसलिए दाद कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ उनको अच्छा काम किया, मतलब किसी की प्लेस ऑफ वर्शिप को डेमोलिश कर देना या और create a situation where the place of worship someone demolished is never a good act. However, they played very good and they were able to convince a large section of Indians that this is the right cause. The credit must be given to them. So, we are moving to the next date, which shaped the present situation, and we are another definite step towards what I call a Hindu Rashtra. That was 9th November 1989. Then Prime Minister of India Rajiv Gandhi allowed Shilanyas to be performed at where the Ram Lala Murti was there inside the courtyard. This practically sealed the fate of the masjid as well as the case for the Muslims, which we see in the judgment of 2019. So practically, once the Shilana was performed, puja was allowed to be performed over there, but Muslims were not allowed to perform namaz after the locking of the gate, as I said earlier, since 1949. But on the other hand, Hindus were allowed. So this practically sealed the case with the Muslims. The gate was pretty inciting and exciting. A lot of things were happening. So next date was August 7th, 1990, when the then Prime Minister of India, VP Singh, whose government, as you know, was supported by एक side से BJP, दूसरे side से left. It was a strange combination. Right and left were together in forming a government. Since the government was a minority and he was sensing that the next election going to be tough, and as the society was getting communalized by every day, BJP was getting stronger by the day, he decided to implement the recommendations of Mandal commissions. Some argue
that this was to preempt the politics of Kamandal, as you say, the politics of Hindu vegetarian. It is said कि अडवाणी जी ने अपनी पॉलिटिक्स को अलाइव करने के लिए बिकॉज मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनको लगा था कि पॉलिटिकल बेस शिफ्ट हो जाएगा कास्ट बेस पे, ही embarked on a journey called रथ यात्रा. उन्होंने रथ यात्रा अपनी शुरू की सोमनाथ सिंबॉलिक टेम्पल से to crisscrossing whole north of India and going back to, was planned as going back to Ayodhya. It was remarkable Rath Yatra, Rath made out of a modified DCM to air-conditioned Toyota truck, crisscrossing north of India and leaving trails of bloodshed. The passion was so high that whichever town it passed through, it left a trail of communal violences which claimed many lives. It hats off to Lalu Prasad Yadav, then the Chief Minister of Bihar, an obvious leader, very strong defender of inclusivity of Hindu Muslim unity. He has stopped him in the track, else the history could have been different. But by the time damage was done, people's passions were very high, car sevaks were coming in hordes and hordes to Ayodhya. And to keep the pot boiling, VHP, RSS had deployed some rebel-rousers leaders like Sadhvi Ratambra, Uma Bharti, Ashok Singhal, and others. And their job was to make a fiery speech in favoring Ram Temple. Finally, on the one wintry cold morning of 6 December 1992, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था. बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया. वहाँ पे अयोध्या में जो कार सेवक जमा थे, कई दिनों से कैंप आउट किया हुआ था. और यहाँ पे याद रखिए इस बात को कि कार सेवक खुद से नहीं आए थे, बल्कि उनको लाया गया था. बहुतों का गुमान यह है कि बहुत सारे कार सेवक को ट्रेनिंग भी दी गई थी. और कार सेवक को लाने में बीजेपी के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक बजरंग दल, VHP का नुमाया रोल था. उन्होंने इससे पहले भी एक बार बाबरी मस्जिद को गिराने की कोशिश की थी, जिसपे कि मुलायम सिंह ने फायरिंग करवाई थी. इसलिए बहुत से लोग जो हिंदुत्ववादी हैं वो मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम भी बोला करते थे. बहरहाल, it was the darkest day in modern Indian history. I think that the framers of the constitution would be cringing in their graves that what happened they didn't wish for. In one such speech given in Lucknow, BJP leader Atal Bihari Vajpayee talked about sharp-edged boulders and the need to level ground. He stood out and was greeted with cheers from the crowd. Many in the crowd and those listening to him in Ayodhya understood the real meaning of his words. However, AB Vajpayee denied this. Lastly, on the 9th November 2019 is the day which finally sealed the fate of Babri Masjid Ram Janmabhoomi issue and tilted one more step towards the creation of vegetarian Hindu Rashtra. In this landmark judgment, Supreme Court of India handed over the land of the erstwhile Babri Masjid to Hindu side, asked the government to set up trust to construct Ram Temple and give 5 acres of land to Muslim side in lieu of the demolished masjid by now. ये जजमेंट कुछ लोगों ने जहाँ इसके लिए खुशी मनाई, इसका इस्तकबाल किया, वहीं पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, जूरिस्ट ने, पॉलिटिशियंस ने, इंटेलेक्चुअल्स ने क्रिटिसाइज किया. And they use one term that judges have employed judicial creativity to come to this conclusion or to give this judgment. और ख़ास बात यह है इस जजमेंट की कि इस जजमेंट में जजेस ने एक्सेप्ट किया कि जो कुछ भी हुआ बाबरी मस्जिद के साथ, कि पहले इसको लॉक किया गया, फिर इसको गिराया गया, दिस वाज अगेंस्ट लॉ and particularly against the law because the state government has given assurance to Supreme Court that the status quo will be maintained.
Despite the fact, strangely enough, despite accepting that everything was wrong, whatever happened to the Babri Masjid by now, the land was given to the Hindu side or side who wanted a temple over there. और second strange बात ये थी, which was against the tradition of Supreme Court, that most of the Supreme Court judgments have the author's name, but this judgment does not mention any author's name. और interestingly, जैसा कि प्रोफेसर अपूर्वा आनंद ने अपने एक आर्टिकल में लिखा, I'm quoting, quote, or did our judges know what they are doing was justifying and rewarding an unjust act and didn't want to take credit for that, quote close. यहाँ में एक और बात भी नोट करने की है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के जो केस चल रहे थे, जो सीबीआई की अदालत में चल रहे थे, वो अभी तक आज तक किसी को सजा नहीं हुई. तो अब इनका यहाँ पे विरोधाभास कोर्ट की नोट कीजिए कि at one place Supreme Court is saying that this was a crime to demolition one place of worship someone, and on the other hand nobody is going to be punished for that. Shri Ram Janam Bhoomi Tirth Kshetra has invited many, including Prime Minister Narendra Modi, to inaugurate Ram Mandir and to participate in the event of Pran Pratishtha on 22nd January 2024. ये पूरा जो राम जन्मभूमि या राम मंदिर का इनॉग्रेशन एंड प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी है, ये रिलीजियस इवेंट के साथ साथ जो है ये पॉलिटिकल इवेंट भी है. आरएसएस, बीजेपी और उसकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस they make sure that this is being recorded as their event, and therefore कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनविटेशन डिक्लाइन किया है, कुछ लोगों ने इनविटेशन दिया भी नहीं है. वैसे ये बड़ी अजीब और गरीब बात होगी कि कोई जो है अभी ये सोचे कि बीजेपी या आरएसएस इसको पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाएगी. अगर भाई ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाते तो ये तो मंदिर बनता ही नहीं. तो ये तो बड़ी सादगी की बात है. किसी ने कहा है कौन न मर जाए इस सादगी पे खुदा. आरएसएस ने कभी भी अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को बहुत खुफिया नहीं रखा. पहले इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनसंघ, उसके थ्रू, और बाद में बीजेपी के जरिए भी ये गाहे बगाहे, कभी छुपके कभी सामने साफ साफ ये बोलते रहे कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऑन द लाइंस ऑफ टू नेशन थ्योरी, लाइक हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू नेशंस. ये अलग बात है कि पाकिस्तान बन गया और 25 सालों में दो हिस्से में बट भी गया. तो लेकिन बहरहाल they have been able to successfully convince a large section of our Indian population that we need a Hindu Rashtra. So much so कि उन्होंने नैरेटिव इतना चेंज कर दिया है कि आज के दिनों में ना ही उनकी मतलब कि बीजेपी और उनकी जैसी पार्टियां, बल्कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज भी हैं, उनके भी बहुत सारे लीडर इस बात पे यकीन करने लगे हैं कि राष्ट्र, रिलीजन इज वन एंड ओनली वन थिंग. दिस वाज एग्जैक्टली द फियर जवाहरलाल नेहरू हैज एक्सप्रेस्ड once. I'm quoting him: "The communalism of the majority is far more dangerous than the communalism of the minority." He reasoned that such communalism wears the garb of nationalism. We thus have communalism ingrained in us, and it comes out quickly at the slightest provocation, and even decent people begin to behave like barbarians when this communalism is around us in them. Unquote. संघ परिवार की स्ट्रेटजी और जो 100 साल का ग्राउंड वर्क है, अब ऐसा लगता है कि वो असर फल देने लगा है. Particularly in the form of majoritarian state and Hindu-first policies pivoted on Muslim hate and otherization. संघ परिवार और उसकी जितनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उससे अलाइड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उस किस्म के थॉट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपना पूरा केस जो बनाया हुआ है वो है hate towards Muslim and hold today's Muslim responsible for the imaginary wrong done by the erstwhile Muslim rulers in the past. Getting Ram Mandir
By demolishing the Babri Masjid, which allegedly existed on the precise site as demanded by the Hindutva forces, is infinitely more gratifying as they can at least set one wrong right in the creation of Hindu nation. India seems to have completed the full circle of its post-independence history of being a liberal, inclusive, and federal republic, now is steadily, gradually moving towards ethno-religious state. This transformation finds its root in the local but volatile issue of Babri Masjid Ram Janam Bhoomi, cleverly orchestrated into a national sentiment demanding rectification. Thank you. If you like the video, please like and subscribe, and don't forget to leave a comment, whether positive or negative, but no abuse. I will be happy to answer the questions if there are any. If you want me to make videos raised on certain points during the discussion, please let me know in the comment. Thank you. See you next time.